Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th Economics Chapter number 6 Unemployment. As you all know, we have already seen a part of this chapter. So today we are here to see the part 2 of the chapter. So before starting the today's portion, as usually, let us move on with a short summarization or a revision of the portion that we have seen on the previous video. So previously we have seen about the introduction, meaning of unemployment and the types of unemployment in a very short manner. Rather than that, let us have a discussion on that. In introduction, we have seen that if you are seeing there are so many economic problems that is faced up by the whole world or the nation, we can say that. So poverty, unemployment, inflation, deflation. So these all things are considered as an economic problem or the problems that are always faced by the developed country and the underdeveloped country also. If you are seeing, you know that there is the problem of unemployment which causes to the poverty also. So in poverty, the major reason of poverty once can be said by the unemployment. So unemployment is considered as a basic reason which is seen up in the developed country and the developing country for the unemployment and many economic problems. So continuously each and every country tries to solve such problem by their way. But after trying so much also, still this problem is not being solved. We can say that in the country like India, you know that the constant supply of the labor is being seen. The population growth is seen once in the while. Rather than that, the employment generation is not seen up, by which the unemployment is increasing day by day. So this is considered as a major issue in the India. So we can say that this we have seen in the introduction. After that, we have seen the meaning of the unemployment. So in that we have seen that when a person is willing to work and able to work in the current wage rate, but still if he is not getting the work, then he is considered as unemployed person. So in this manner, according to Professor Pigou, we have seen that when a person is willing to work and capable to work but still not getting the work is considered as unemployment. In this portion, we have seen the definition of Professor Pigou. After that, in short sense, if you are seeing unemployment means a situation where a person or individual is willing to work and capable to work at the current wage rate, but still if he is not getting the work is considered as the unemployment. Why such time this thing is being discussed? Because after that important portion has been discussed in economic. If you are seeing a person who is willing and not getting the work is considered as the unemployed one, but the person who is not willing and not getting the work is not considered unemployed, rather than is considered that voluntarily unemployed, and voluntary unemployment is not a problem in economic. Only unemployment, the one who is willing and not getting the work, is considered as a problem in the economic situation of any country. So in this portion, if you are seeing the active labor force has been discussed up. When an active labor force is willing to work and not getting the work, they are considered as unemployed one. For example, from the year 15 to 64 years age, people can work in a very active manner. So they are considered as active labor force. So if this force people are not getting the work after willing also, then that is considered as an unemployment. Even in this portion, if the people, those who are children, rather than that we can say that general citizens, senior citizens, elder people, and rather than that the voluntary unemployed people are not included in the active workforce. So this was the meaning that we have seen. After that, we have seen the types of unemployment. There is unemployment prevailing in the developed country and the developing country also. If you are seeing the developed country, there is a different type of unemployment. That unemployment is considered for short term. When there is the decrease in demand, due to that when the employee are unemployed due to the inactive demand, is considered as the short term unemployment. Such as cyclical and disguised unemployment can be seen in the developing country. But this
the unemployment can be removed in a very short term. When the demand increases, the unemployment vanishes. But in India, it is not like that. In India, the unemployment is for a long term. Why it is considered as a for a long term? Because here one side the population growth is seen in a very immense way. On the other side, if you are seeing, the people are not getting the employment opportunity that much, and due to that, if you are seeing, the unemployment is also rising a lot, and by which we can say that the poverty increases a lot. So in this manner, the unemployment in India is a long term situation, and even the government is trying to solve and reduce the poverty in many more policies and formulation, but still it is having the failure. And what are the types of the unemployment that we are going to see today? So students, without wasting the time, let us move on with the today's portion of unemployment in a very detailed manner in the further PDF. So students, now let us move on with the today's portion. So last time we have completed the introduction of the types of unemployment. So today we are going to continue with the second paragraph in a very detailed manner. So I am going to read it out, listen it out carefully. To know the nature and the types of unemployment, Shri Raj Krishna Committee reports in 2011 and 12 has given 4 measures. अगर अनएम्प्लॉयमेंट की नेचर और टाइप्स को जानना है, उसके लिए श्री राज कृष्णा कमेटी ने जो रिपोर्ट 2011 एंड 12 में बनाया था, उसमें 4 मेजर्स दिए हैं, जिस 4 मेजर्स से हम कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को जो है अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं और कितने टाइप्स के वो भी देख सकते हैं, उसका नेचर अच्छे से समझ सकते हैं. सो फर्स्ट इन दैट इज टाइम. So I'm going to read it out, listen it out carefully. If any person has willingness and capacity to work but does not get work for more than 28 hours a week, he is said to be intensely unemployed. But those who are unemployed for more than 28 hours and less than 42 hours in a week, they are considered as less intensive अनएम्प्लॉयड पर्सन्स. सो अगर कोई इंसान काम करने की इच्छा रखता है, उसकी विलिंगनेस है, वो काम करने की उसकी कैपेसिटी भी है, और फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट 28 आवर्स मतलब एक दिन का 24 आवर्स होता है, और 28 मतलब यू कैन से दैट कि 28 मतलब इट जस्ट एक दिन और ऊपर के 4 घंटे. रेदर देन दैट इफ यू आर सीइंग 28 मतलब 7 दिन के 4 घंटे. इन वन डे यू मस्ट वर्क फॉर 4 आवर्स. और अगर एक इंसान को एक दिन का 4 घंटे का वर्क भी नहीं मिलता है, एक वीक में 28 आवर्स भी नहीं मिलता है, तो वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, यानी वो कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड माना जाएगा. बट अगर वो एम्प्लॉयमेंट करता है, बट उसकी एम्प्लॉयमेंट 28 आवर्स से 42 आवर्स के बीच में देखा गया है, ठीक है, 22 से 42 आवर्स के बीच में देखा गया है, इट मीन्स वो 6 आवर्स तक का जॉब करता है, तो उसे लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड माना जाएगा. सो इस तरीके से कहीं ना कहीं एज पर द टाइमिंग अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली एक इंसान को कम से कम एक दिन में 8 घंटे का जॉब तो होना ही चाहिए, ये माना जाता है. वो एक पर्टिकुलर जॉब जो है परफेक्ट जॉब और परफेक्ट सैलरी उसके लिए आप कमांड कर सकते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक परफेक्ट टाइमिंग माना जाता है. टाइमिंग के हिसाब से अगर एक इंसान 28 आवर्स भी जॉब नहीं करता है, इसका मतलब वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है. और अगर वो 28 से 42 के बीच का ही टाइम करता है, 42 से ज़्यादा नहीं करता है, तो उसे कहीं ना कहीं लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड माना जाएगा. नेक्स्ट इट इज़ इनकम. I'm going to read it out, listen it out carefully. When a person gets very less income which cannot solve the problem of his poverty, then from the income point of view, he is poor. In the rural India, especially, this type of poverty is seen. For example, a person required 30,000 per month for satisfying the need of his family, but he earns only 15,000 or less than that from his present जॉब. सो इनकम की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन बहुत लेस इनकम जनरेट करता है जिससे उसकी फैमिली की पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व ना किया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छा एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि किसी की घर की खर्चा, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा भी होता है, अननेसेसरी खर्चा होता है, बट बेसिक खर्चे की अगर हम बात करते हैं, घर पे 5 लोग हैं, उनका खाने पीने का, इलेक्ट्रिसिटी और मकान अगर रेंट पे तो मकान का रेंट, ये सारी चीज़ें गिन के ही
30,000 हो जाता है, उनके हाथ में कोई बचत नहीं होता है, सिर्फ बेसिक नेसेसिटी पूरा करते करते 30,000 हो जाता है, बट उतना भी उसकी इनकम ना हो, प्रेजेंट जॉब में उसको सिर्फ 15,000 मिलता हो, तो बाकी का 15,000 का क्या, तो लोगों को आधा पेट खाना खाना पड़ता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बचत करना पड़ता होगा, वो एक्चुअली जितनी नीड से उसको यूज करना चाहिए उतना भी यूज नहीं करते होंगे। इस तरीके से ये जो इनकम की बात अगर हम करते हैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो रूरल इंडिया में स्पेशली इस टाइप का पॉवर्टी देखा जाता है, जितना उनको वेजिस मिलना चाहिए उतना उनको वेजिस नहीं मिलता है, जिससे उनकी बेसिक जो नेसेसिटी है वो भी पूरा नहीं किया जा सकता। सो इन शॉर्ट, व्हेन यू आर अर्निंग and your income does not fulfill your basic necessity, then it is considered as unemployment, or rather than that, due to this a poverty can be seen up. Next, it is willingness. When a person is eligible for getting good job but he does not get job as per her his eligibility and accepts lower cadre job and gets very less income from this job, then he is underemployed. Example, if CA has to work as a clerk. So जब एक इंसान को काम करने की इच्छा है, वो काम कर सकता है, इतना कुछ काम करने की कैपेबल इच्छा होने के बावजूद उसे जॉब नहीं मिलता है, उसकी एलिजिबिलिटी अच्छी है और उस एलिजिबिलिटी के उसको जॉब नहीं मिलता है, तो वो उससे थोड़ा नीचे वाला चला जाएगा। यू नो दैट इन द नीड, मजबूरी में इंसान को जॉब जब करना ही ऐसा हो जाता है तो उसके लोअर लेवल में भी चला जाता है। सो जब वो एक लोअर लेवल के केड़ में जाता है तो ऑब्वियसली उसका जो सैलरी होना चाहिए उसकी एजुकेशन के हिसाब से उतना सैलरी तो उसको मिलेगा नहीं। सो उसे अंडर एम्प्लॉयड बोला जाएगा। जैसे सीए है, सीए का आपको पता है पर मंथ 1 लाख का सैलरी देखा जाता है, बट सीए को अगर क्लर्क की जॉब करना पड़े, क्लर्क में कितना मिलेगा, 15,000 20,000, तो उसका जो पे स्केल है उस पे के हिसाब से, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जब उसको जॉब नहीं मिलता है और उसको इनकम नहीं मिलता है तो उसे कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयड बोला जाता है। नेक्स्ट, इट इज प्रोडक्टिविटी। When a labor is working with less than his actual productivity, then production is less than his productive capacity. Example, a person can make 20-meter clothes in a day but gets a job where he can make only 10-meter cloth. According to the above measuring rod, unemployment can be divided in the following types. सो प्रोडक्टिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लेबर काम करता है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी होती है, उसकी वर्किंग जो बोलते हैं एफिशिएंसी स्किल होता है। जैसे कोई एक इंसान एक काम को 10 मिनट्स में कर सकता है, कोई एक काम दूसरा इंसान वही काम को 20 मिनट्स भी लगा सकता है। तो एक्चुअल हर एक लेबर की एक वर्किंग एक्चुअल प्रोडक्टिविटी होती है। अगर उसकी जो प्रोडक्शन लेवल है उस लेवल से अगर वो कम प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले यूनिट में कहीं काम करता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दिया है, एक इंसान 20 मीटर क्लोथ एक दिन में बना सकता है, बट उसे जॉब ऐसी मिली है कि दिन में उसको सिर्फ 100 मीटर क्लोथ ही बनाना है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लेवल है उस लेवल से उसको कम प्रोडक्शन देना पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। सो ऊपर जो 4 टाइप्स दिए थे उस टाइप्स के हिसाब से नीचे हम जो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस मेजरिंग रॉड, जैसे कि टाइम हमने देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, टाइम के बाद हमने इनकम देखा, फिर विलिंगनेस देखा, फिर प्रोडक्टिविटी देखा। सो टाइम, इनकम, विलिंगनेस, ये चारों मेजरमेंट को लेके हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो डिफरेंट टाइप्स है इसको अच्छे से समझ सकते, जिसमें से फर्स्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. Those individuals who are ready to work at current wage rate and possess qualification too but do not get any job are said to be fully unemployed or open unemployed. So यहाँ पे जो भी इंसान काम करने के लिए रेडी है और करंट जो वेज रेट है उसके लिए भी रेडी है, उसके पास क्वालिफिकेशन पढ़ा लिखा भी है, ये सारी चीज़ों से वो रेडी है और क्वालिफाइड भी है, फिर भी अगर उसको जॉब नहीं मिलता है तो वो फुल्ली एम्प्लॉयड या ओपन अनएम्प्लॉयड, फुल्ली अनएम्प्लॉयड या ओपन अनएम्प्लॉयड माना जाता है. इन शॉर्ट, एज आई सेड, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जितने भी यंगस्टर जॉब करने के लिए रेडी है और वो क्वालिफाइड भी है बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं फुली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड माना जाएगा. सो लेट अस रीड द सेकंड पैराग्राफ. कॉमनली द कंट्री इन विच लेबर सप्लाई इंक्रीजेस फास्ट एंड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन ऑल्सो फास्ट ओवर देयर हाई रेट
a full unemployment can be seen. This type of unemployment is seen more in cities than in village. Open unemployed people are those who migrate from village to city in search of job. People suffering from open unemployment are educated or less trained skilled people. सो हियर कॉमनली इफ यू आर सीइंग, अगर हमारी कंट्री की बात करते हैं तो यू नो दैट हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से लेबर सप्लाई जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ नजर आता है. सो ये जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन का, ये इतना यानी सिटी, हर गांव अब सिटी बनने लगा है. सो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो रहा है, इसीलिए हाई रेट ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिटी में देखा जाता है. क्यों? ये जो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है ये ज़्यादातर सिटी में इसीलिए देखा जाता है विलेज की जगह, क्योंकि वो ओपन अनएम्प्लॉयड की बात करते तो लोग जो गांव में रहते वो जॉब के इच्छा से, जैसे कि गांव के लोग क्या करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, खेती बाड़ी है, कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, तो इससे अच्छा सिटी शहर चले जाते हैं, वहाँ कुछ जॉब ढूंढ लेते हैं. इस तरीके से विलेज पीपल गेट माइग्रेटेड टू द सिटी साइड टू गेट और सर्च द जॉब. सो ड्यू टू दिस अगर आप देखो तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादातर सिटी में देखा जाता है. लोगों को सफ़र करना पड़ता है, सफ़र यानी बहुत बुरी हालत होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट से. क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड है, उनकी भले ट्रेनिंग लेस ओके ज़्यादा हो, स्किल्ड पर्सन है, उनकी में स्किल है, आवड़त है, सब चीज़ होने के बाद भी अगर जॉब ना मिले और सैलरी ना मिले और उनको फिर गरीबी का शिकार होना पड़े, सो ये सबसे बड़ा सीरियस इशू माना जाता है. सो लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. People with open unemployment cannot work and cannot get work, but such people consume goods and spends. Hence, they become a burden and reason for low productivity. Open unemployment can be seen more among the age group of 15 to 25 years. To get proper number of unemployed people is very difficult, but still there are three methods. Through registration in employment exchange center, थ्रू सैम्पल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई, थ्रू सेंसस. सो अगर हम ओपन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उनको काम नहीं करने को मिल रहा है, वो काम नहीं कर सकते, उनको काम मिल ही नहीं रहा है इसलिए वो नहीं कर सकते. तो ऐसे लोगों को ऐसा तो नहीं हो सकता, जैसे मैंने बोला काम नहीं करे तो खाना नहीं खाते होंगे, गुड्स नहीं खरीदते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये गुड्स भी खरीदते हैं, खर्चा भी करते हैं. तो इस तरीके से ये एक बर्डन यानी वी कैन से दैट बोझ बन जाते हैं लो प्रोडक्टिविटी की रीज़न का. जैसे हम लो प्रोडक्टिविटी की पोर्शन देखते हैं, उसकी रीज़न का एक बर्डन इनको माना जाता है. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, ज़्यादातर ये कौन से एज ग्रुप में देखा जाता है, तो 15 से लेके 25 साल के बीच में देखा जाता है. आज भी अगर हमें प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल के बारे में जानना हो, जैसे प्रॉपर नंबर इन द सेंस कितने लाख है, कितने परसेंटेज है, तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है. बट स्टिल हमारे पास 3 मेथड है जिसके थ्रू हम इसको जान सकते हैं. जैसे कि आपको पता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है जो अनएम्प्लॉयड है उनका, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जाना सकता है. सेकंड, सैंपल सर्वे लेबर सप्लाई का निकाल के उसमें से कितने एम्प्लॉयड कितने अनएम्प्लॉयड है ये जाना सकता है. थर्ड है सेंसस रीडिंग. सेंसस रीडिंग के थ्रू भी हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान सकते हैं. सो इन दिस मैनर हियर वी आर कंप्लीटिंग अप द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. सो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, कैपेबल है, एजुकेटेड है, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता. और ज़्यादातर ये कहाँ देखा जाता है, तो ज़्यादातर ये जो है अर्बनाइज्ड एरिया यानी सिटीज़ में देखा जाता है, क्योंकि विलेज पीपल गेट माइग्रेटेड टू द सिटीज़ फॉर द जॉब. बट एज दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, सो दे बिकम द burden of the low productivity, due to which the poverty also increasing in a high level. But we can know the portion of the people those who are unemployment by 3 methods. First is registration from the employment exchange, second is sample survey labor supply, and third is census. So now next is underemployment. So I'm going to read it out, listen it out carefully. The labor cannot utilize their capabilities fully and for certain period except less capable job is said to be underemployment. ठीक है, एम्प्लॉयड. सो यहाँ पे जब कोई लेबर की कैपेबिलिटीज़ हो, वो यूटिलाइज कर सकता है, बहुत उसकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी हो, जैसे मैंने बोला वो दिन में जो है 50 यूनिट्स बना सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी है, बट उसको जॉब ऐसी मिली है कि उसको दिन में सिर्फ 25 ही बना सकते हैं, यानी 25 यूनिट्स उसको कम बनाना है. तो उसकी जितनी कैपेबिलिटीज़ है उस कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहा है, उसका कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसको लेस कैपेबल का काम करना पड़ रहा है, तो उसे भी कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयड
अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जितना अपनी कैपेबिलिटीज़ है उस कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जब हमें जॉब नहीं मिलता है, उससे लेस कैपेबिलिटी वाला जॉब मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसे अंडर एम्प्लॉयड बोला जाएगा। जैसे एमबीए करके आप कहीं पे एमबीए करते हो तो आपको क्या होता है, आप एक बिजनेस कंपनी के एमबीए का रोल निभा सकते हो, आपका मंथली सैलरी 60 to 70,000 हो सकता है। बट अगर आप एमबीए करके कहीं छोटे मोटे असिस्टेंट्स में या क्लर्क में चले जाते हो क्योंकि एमबीए का जॉब नहीं मिलता और 10-15 हज़ार में कहीं जॉब कर रहे हो तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड ही माना जाएगा। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। When a laborer is willing and ready to work for a certain years or day but get job for less than those hours or days, then he is said to be underemployed. For example, a laborer working in industry or agriculture land get works only for 5 hours instead of 8 hours. Then he is said to be underemployed. According to this meaning, in rural India, the seasonal unemployment in agriculture sector is a type of underemployment. Because the laborer in agriculture sector gets work only during sowing and harvesting season, is unemployed rest of the time. Indian agriculture is based on monsoon and due to limited irrigational facility, agriculture sector faces seasonal nature of unemployment. जब भी एक लेबर की इच्छा हो काम करने के लिए और वो रेडी भी हो काम करने के लिए सर्टेन सालों के लिए, यानी उसने डिसाइड कर लिया कि और 15 साल मुझे अच्छे से जॉब करना है, मुझे हफ्ते में 5 दिन का जॉब तो होना ही चाहिए। इस तरह का नॉर्मली यहाँ पे 6 डेज का होता है, फॉरेन में 5 डेज का होता है, तो 6 डे का जॉब तो मुझे मिलना चाहिए, उसमें मुझे 8 आवर्स का जॉब तो मिलना चाहिए। इस तरीके का जो है उसने डिसाइड कर लिया, बट जैसा उसने डिसाइड किया उस हिसाब से उसको जॉब नहीं मिला तो उसे अंडर एम्प्लॉयड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबर है जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लैंड में काम कर सकता है, तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लैंड में आपको पता है आप इंडस्ट्री में चले जाओ कि एग्रीकल्चर में चले जाओ, आपको दिन का 8 घंटे तो काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम, बट उसको सिर्फ 5 घंटे का वर्किंग टाइम मिलता है। इससे ये बोला जा सकता है कि वो 3 घंटे अंडर एम्प्लॉयड माना जाएगा। तो इस तरीके से रूरल इंडिया, गांव में अगर देखो तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, जैसे सीजन होता है तभी जॉब होता है, बाकी के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस टाइप का अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखा जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि लेबर्स जो भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं इनको काम कब मिलता है? इनको काम सिर्फ सोइंग और हार्वेस्टिंग, बीज बोने के टाइम पे और फसल काटने के टाइम पे ही मिलता है, बाकी के टाइम पे इनको अनएम्प्लॉयड होकर घर पे बैठना पड़ता है। इस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर जो पूरा के पूरा मॉनसून और इरिगेशन लिमिटेड फैसिलिटीज के साथ चलता है, वहाँ पे इन लोगों को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ता है, जो कि एक टाइप का अंडर अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। Similarly, many individuals do not get job according to that degree. They accept degraded job. This is also called unemployment. A person with a degree of computer engineering works in a garage. So यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उसी तरीके से, ये तो हमने एग्रीकल्चर और लेबर की बात किया, उसी तरीके से अगर हम देखें बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनको जॉब अपनी डिग्री के हिसाब से नहीं मिलता, जैसे उनका डिग्री होता है उस हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलता, फिर उनको अपने डिग्री से कम जॉब, जो उसके डिग्री के लिए लेवल पे जो जॉब नहीं होता उससे जो कम जॉब होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसे अंडर एम्प्लॉयड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, यू नो दैट उसको कितना अच्छा स्कोप मिल सकता है, बट अगर उसको जॉब ही नहीं मिल रहा है और वो अपने एक गैराज में वर्क करना शुरू कर देता है तो वो भी एक अंडर एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट इट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। सो आज का टॉपिक यहाँ तक रखेंगे। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the types of unemployment, in which we have seen 4 important elements, and after that we have seen 2 types of unemployment in a very detailed manner. For knowing about the unemployment, we must know about the nature of the unemployment. That's why Sri Raj Krishna Committee in the year 2011 and 12 given 4 measures to know about the unemployment element. In that we have seen the first topic of the
time. So you know that whenever the person is working for 8 hours for a day, that person is considered as employed. But when a person is working just for 28 hours or not getting 28 hours job, also less than 28 hours if he is working, then it can be said as intensively unemployed person. And in the same scenario, if a person is working 28 to 48 hours, then that person can be considered as less intensively unemployed person. But here if you can see, the measure time period for one person for working per day is 8 hours. So he must work 8 hours, and 7 days if you are seeing, he must work more than 56 hours. But if he is not getting that much also, then he is considered as unemployed according to the time. Second, it is income. If you are seeing, you know that we have to fulfill our basic necessity. That is the reason that we are working and doing economic activity. So if we are not able to fulfill our present basic necessity by our present income, then it can be considered as unemployment, and due to that poverty can be seen up. For example, if you are seeing a person is getting a salary of 15,000, but he has to fulfill his house satisfaction or needs by 30,000, so he is not able to fulfill the house basic need, due to which he has to face the poverty. So even income decides the unemployment in a very detailed manner. After that, we have seen the portion of productivity. So in that also we have seen in a very detailed manner, when a person is not getting the productivity skill, for example, he is a very good and efficient person, if he can work for many hours and he can do the production. For example, if an individual can do the production of 50 units in a day, but if he gets a job in which he has to just produce 25 units, then it is considered as the portion of unemployment, because according to the production level that he can do, according to his efficiency, is not getting the job, then it is considered as the portion of unemployment for that person. So in this manner we have seen the 4 topics of the underemployment elements in a very detailed portion. Even the skills and the trainings are being considered. According to that he can work, but if he is not getting that work according to the skill, that is also an type of underemployment. So this we have seen in a very detailed manner. After that we have seen the open unemployment. If you are seeing what is open unemployment, open employment means a situation in which an individual is able to work, willing to work, qualified to work at the current wage rate, but still if he is not getting the job, then it is considered as fully unemployed or open unemployed for that person. So in this portion we can say that the capability and the efficiency of the persons is there to work, but still is not getting due to the less employment generation or by many basic economic problems. We can say that in India, you know that constantly the supply of the labor is been increasing. On the other hand, the unemployment has been increasing. Why? One side the labor is increasing and other side the employment opportunities are not increasing, due to which the labor supplies increase and the unemployment decrease, and the employment opportunity decrease, due to which the unemployment increases a lot. So here in this situation, if you are seeing a person is able to work and do the work according to his portion, but he is not getting the work, then he is considered as the open unemployed or under unemployed person. And this portion is seen up mostly in the urbanization area. Why? Because in rural area, if you are seeing, the people get migrated to the urban, because the fast development of the urbanization attracts the village people, and they consider that they can get a good job there. So due to the education and skilled and less training also, we can say that they might not get the job that they are willing, and rather than they're not willing or even not getting a job only in this situation, then in this situation they have to
eat and they have to survive. So the goods are being used and spent money by that particular individual who is unemployed. But still, as we can see, they have to do the expensive and not able to create the income. Then the problem of low productivity is being seen, and as a burden it is being seen. So in this manner, if you are seeing, the open unemployment has been seen in a very detailed manner. We cannot measure the proper numbers of the open unemployment, but we can measure it by the registration of the employment exchange department rather than through census, and by the sample survey of that portion. After that, we have seen the underemployment. If you are seeing the underemployment, we can say that underemployment means a situation where a person is willing to work for certain years, hours or days, but he cannot get the job according to that. He's getting a job, but he's not getting according to his level, and he's getting a little low level, then it is considered as under level. Even we have seen two examples in a village side. If a labor is willing to work for 8 hours but he gets only the job for 5 hours, then he is considered as an underemployed person. Due to this, the income can also decreases. Okay. Second, if you are seeing in urban area, if you are seeing a person is a computer engineer and works on a garage, then it is considered as underemployed. So until this, we have seen in a very detailed manner. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Rather than, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.